then on this? तो ये बोले क्या भाई का तू रोया था ये मैं दिखा so null so lame. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. So today I have my friend with me. His name is Tejas. Introduce yourself. Come on. Hi guys. क्या क्या करना पड़ता है लॉकडाउन में. So we know each other since last 20 years. 20 years थोड़ी ना. 28 हम years. बाजू में बहुत पहले से रहते हैं बट Okay. अच्छे से जानना एक दूसरे को. अच्छा. 5 to 6 7 years. 5 to 7 Okay. years. So few days back I asked you guys on my Instagram story that I'm going to do a video wherein guy answer a question which girls are afraid to ask. So we are going to do that with my friend. So let's see how this goes, and it is a mixture of spicy, juicy and good question as well. So let's see how it. First question, do you guys talk about girls like girls talk about guys, and also similar to that, do you guys gossip? Yes, obviously, but yeah, everyone gossips, but guys Like के gossip- talks में guys के gossips में थोड़ा maturity रहता है, not like girls के मतलब. What do you mean maturity? Like बहुत what do you guys talk about? What do you guys gossip about? we gossip about not general gossip with girl में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया. We talk about कि यार वो ऐसी है, वो अच्छी है, वो गंदी है. अच्छा, so you basically talk about girls. या अगर गर्ल्स के बारे में gossip करते रहेंगे तो गर्ल्स के मतलब बारे में बात करेंगे. what topics you guys gossip on? So जैसे गर्ल्स बात करते कि उसने मैंने उसको ऐसा बोला फिर उसने ऐसा किया. We don't go that deep. It's generally like one like conversation कि हाँ वो ऐसी है, वो अच्छी है, वो बुरी है. That's it. No, not बुरी है. We don't judge. अच्छा girls. ठीक है, but But- other than girls के topic के बाद ऐसा उसके I do अलावा think कि guys don't gossip a lot. I don't think so. इतना टाइम ही नहीं रहता है. Generally girls overthink a lot. And not it's guys. not about overthinking, it's about gossiping. I hope they'll agree. I Just- hope they'll agree. Next, what are big turn off for guys? Immaturity. A big turn off. Really? Yeah. Other than that? Other than that, if I'm talking something to a girl Hmm. and if she is obviously not paying attention to what I'm talking and if she's saying her own stuff and she's more obsessed with her like you are, तो ऐसा हो जाता है यार मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्या बोल रही है मतलब मैं क्या बोल रहा है. And she's not listening to me. So I think sometimes girls need to be a good listener too. Boys can't always do that role, you know. Okay, So that's a big turn off in long term. Starting में तो देखो पता सब अच्छा ही रहता है. मतलब correct. पटाने का रहता है तो अच्छे ही चलता है. Correct. तो इन लॉन्ग टर्म दैट्स अ टर्न ऑफ. कोई भी किसी भी चीज़ से टर्न ऑफ हो सकता है, वो उसके इंटेलेक्ट पर डिपेंडेंट है ऑब्वियसली. लेकिन या इफ यू आर डीलिंग इट विद इमैच्योरिटी ऑलवेज. स्टार्टिंग में तो क्यूट लगता है मतलब अगर तो ऐसे बिहेव करेगी अरे कितनी क्यूट है, इसको तो ये भी समझ में नहीं आता, मैं समझाऊंगा ये करूँगा वो करूँगा, बट बाद में वो हेक्टिक होते जाते हैं ना, बहुत हेक्टिक. Okay, so immaturity turn off you guys. या मतलब शी शुड बी वेरी कूल इन ऑल टर्म्स. मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं कुछ भी करूँ और वो सुन ले, लेकिन she should be able to handle stuff, you know. ऐसे नहीं कि हाँ मतलब she should have a perfect vibe with you. yeah right, the connect Okay. that matters Yeah. a lot. So The most important thing. next question. Yeah. This is a good question. Do you care if a girl is shaved or not? Shaved as in Shaved or not? कहाँ पे? Whatever part, like hand or like Not whatever. actually. I don't think so that it matters a lot, but keeping your hygiene good is always good, right? Correct. So no one pays that much attention. मतलब starting में तो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं कि तूने शेव किया कि नहीं किया. मतलब girls think a lot about this because लड़कियाँ क्या करती है पता है तेरे को. लड़की ना एक ये नहीं सोचती कि लड़का क्या सोचेगा, वो सोचती है कि दूसरी लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी. तो that's the reason. So girls बहुत सोचती है इस बारे में. But yeah, it's good to be hygienic. Yeah. समझ गए सब. समझो, लड़कों को समझो. मेरे दिमाग में वो गाना आ रहा था, भरो मांग मेरी भरो. Next question. What's your favorite thing for a girl to wear? Why would a guy want a girl to wear anything? No, but like there are few guys, you know, who don't like Okay, what anything girl is for wearing. me. Okay, for basically if a girl is beautiful and she knows how to carry herself, anything what she wears suits her.
ओके मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां जब So यू नो proud of you. अरे मोस्ट So देखो proud of वेस्टर्न में तो लड़कियां हॉट I'm so लगती proud. हाँ वो पता है वेस्टर्न में तो लड़कियां हॉट लगती भी है लेकिन व्हेन यू जनरली लुक अ गर्ल इन वेस्टर्न आउटफिट एंड व्हेन शी गोज फॉर अ ट्रेडिशनल आउटफिट्स ऑन ट्रेडिशनल डेज मैन She looks bomb, I know. पॉम मतलब शादी कर ले मेरे से पॉम मतलब शादी कर ले मेरे से दैट काइंड ऑफ स्टफ Do you guys ever think about marriage? Is it recording everyone now? thinks about marriage at a certain point of time depends आप उस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो शादी के बारे में कौन नहीं सोचता डिपेंड्स ऑन दैट So like रिलेशनशिप how often you think about marriage? ऑब्वियसली नॉट डेली मतलब रोज रोज कौन सोचता है Correct. तो लड़कियां तू क्या बोलती है कि लड़कियां रोज सोचती है कि शादी के बारे में No, मतलब as soon as but- you get into a relationship 10 दिन हो गए दैट निब्बा निब्बी स्टफ कि That is nibba nibbi stuff, not कि you know नहीं हमारे age सात के लिए. मतलब 7 जन्मों का साथ एंड स्टफ नॉट लाइक दैट बट या इफ देयर इज अ कनेक्ट एंड इफ यू फील कि हाँ वी आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन टेक इट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड वी विल बी ग्रोइंग टुगेदर देन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो व्हाई नॉट यू ऑब्वियसली गिव इट अ थॉट ऐसा लग रहा So है basically, if it's not that like that- girl is basically made for you, then only you will think. Like if you're thinking, "Ha, chal, this is going with my vibe. She's connected to me. I'm connected with her." So at that moment, you start thinking बेसिकली like that. दिस कॉन्सेप्ट दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर ये मतलब स्टार्टिंग में जब भी आता है तो ऐसा लगता है थोड़ा इमेच्योर्ड है बट व्हेन यू स्पेंड दैट टाइम इनटू रिलेशनशिप और आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मतलब हो रहा है कनेक्ट यू नो दैट रिलेशनशिप गेट्स टेस्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग में देखो लगेगा सब अच्छा क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा ही रहता है Yes, बट आफ्टर अ obviously. टाइम जब तेरे झगड़े Yeah, होते हैं basically after a year Yeah. or 1.5. like yeah. what is मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ डू यू हैंडल दोज लोज इन योर रिलेशनशिप Yeah, बिकॉज हाइज true. में तो सब अच्छा ही रहता है Correct. So if you can handle those lows and you can bring you guys, you know, तुम लोग साथ में वापस ऊपर आ सकते हो तो you can think about Think it. about But और भी बहुत सारी चीजें होती है सोचने के लिए. True. Like सबके अलग अलग Priorities. priorities also, and every guy has different perspective about that point. So yeah, basically that's what he thinks and that's what he said, but that's true. ये अपना perspective. So yeah, next question, do you like girl with makeup or without makeup? It's not bad to have makeup, but they look You know good. what, guys think like even if we don't wear any makeup, they are like इतना makeup लगा हाँ क्यों नहीं है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज इफ आई एम डेटिंग समवन वो मेकअप करके मेरे को बहुत पसंद लगे ठीक है एंड आई स्टार्टेड डेटिंग तो नेक्स्ट डे आफ्टर अ पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट मेकअप एवरी डे राइट तो नेक्स्ट दिन जब तू नहीं पहन के आएगी तो इट शुडंट बी अ टर्न ऑफ एंड इट्स लाइक कि नहीं नाउ दैट स्पार्क इज लॉस्ट Yeah, and true. stuff like that so starting में you will go that way and फिर it will be a failure for a girl itself but yeah I मतलब girls should know that they look more beautiful without makeup and it's what you know what you radiate to the other person matters the most other than your makeup and your face because आपका first impression आपके face से जाएगा उसके बाद you know that connect और आप क्या बात कर रहे हो that matters so your makeup won't last longer than your personality True. क्या लाइन बोला ना मैंने ओ भाई वही मैं बोल रहा तेरे को ज्यादा ही deep shit and deep information वाली बातें कर रहा है basically which he don't at हाँ, all. अपना बकचोदी वाला So person. true. Okay. So next question. Would you care if your girlfriend had a lot of guy friends? Why will I care? I'll be like she is very cool. So that's the advantage. What That- matters the most is पता है कि मतलब लड़की के कितने भी दोस्त रहते हैं communication matters a lot. So if they can keep that secured, like उसको पता है कि ये किधर भी जाए यार कुछ भी बहुत करे. अच्छी बातें कर रहा है तेजस, I'm so proud of I you. told you. तो अगर बंदे को पता है कि यार अपनी बंदी है मतलब किधर भी जाने दे कुछ भी करने दे तो इफ इज वेरी सिक्योर्ड अबाउट हर तो उसको कभी Yeah, भी ये सब मैटर नहीं करेगा एंड या सो कम्युनिकेशन मैटर्स अ Communication and लॉट trust. These yeah two trust things obviously matters a yeah lot. but in long term again you need to communicate over these things a lot A lot. और यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत मैटर Matter, you yeah. need to be in your consciousness and you need to be aware के अंदर क्या हो रहा है You need to basically know how to Yeah, handle and things basically and not to just ruin everything. An advice I'll give to guys is कि अगर आपको लग रहा है कि if you are insecure that your girl is going out with a guy and
आप बस अपने बंदी को दिखा रहे हो कि नहीं इट्स कूल, मैं तो कूल हूँ, ऐसा मत करो, बिकॉज वो फीलिंग आपके अंदर बढ़ती जाएगी एंड यू कांट बी फेक फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो जो है कम्युनिकेट करके उधर ही खत्म कर दो, सो दैट वो जब छोटी लेवल पे हो वहाँ पे ही सॉल्व हो जाए. Yeah, just talk to it, like discuss करो एक दूसरे के Yeah, साथ basically instead of communication. overthinking about such things. Sit and talk to each other first. So yeah, You need to be communication. very clear about your priorities in your... Moving on to the next question. Would you feel jealous if your girl hang out with her guy friends? No. So Same. basically the So, same question. same question, yeah. The answer is same, like A communication. guy gets jealous trust. only when he's insecure about his girl, but Yeah, correct. या मतलब लड़की के दोस्त तो होते ही है और अभी के टाइम Yeah, पे तो this is होने ही वाले common, हैं. right? It's very like common, it's very common. girls cannot like only go with girlfriends or only their And, girl best friends. yeah. Even we have some guy friends. मेरा इंटरव्यू Shut up. आंसर बोल. कौन देने वाला? मतलब तू क्वेश्चन पढ़ रही है, तू आंसर दे रही है. ये क्या चाल रहा है? मतलब तू क्वेश्चन पढ़ेगी, तू आंसर देगी, मैं क्या Okay, बोलूं उसमें? go हाँ, नहीं, ahead. रुक. तो अगेन इसमें इनसिक्योरिटी का ही पॉइंट है, यू नीड टू कम्युनिकेट. एंड अगर अ गाय गेट जेलस ओनली व्हेन इज वेरी इनसिक्योर अबाउट कि वो बंदी जा रही है तो मेरे को बुरा लग रहा है, बट यू नीड टू कम्युनिकेट अबाउट इट. और अभी के टाइम पे तो मतलब बंदियों के दोस्त ही ज्यादा रहते हैं लड़कियों से ज्यादा, ऑब्वियस पॉइंट है. And because people are more open-minded these days, तो also you need to be a bit open-minded, but then कभी अगर आपको नहीं छोड़ चल बस इतनी. A bit open-minded, plus also you have to be very aware about what you're feeling. people you are with, and Yeah, you have right. to, like, you should first know whether we can trust the samne wala person Yeah, or yeah, not. that. So don't be like open-minded with the samne wala person directly. First know each other and then start building whatever the Yeah, relationship you want to. Right, if your Yeah. guy is telling you that this guy is not right, maybe you think that it's coming out of his insecurities, but maybe sometime he might be right. So also you need to be that understanding that कि ये सच बोल रहा है या फिर वो बंदा सच्ची में वैसा है कि उसके intentions क्या है, because your guy will Yeah. always look for Because the good, right? yeah, because there are guys like who who pretend to be a good guy in front of you, and peeth piche they are being there who they actually are. So you need to be aware of everyone. Yeah. Okay. Next question. First thing that you notice in a girl. First thing you notice in a guy. Like basically, if you go on a date with some girls, like with some girl. वो सोच के हंसने का है, मतलब I With some don't girl. know कि मैं किस तरीके से आंसर दूँ, मतलब what Like, kind of answer be you honest, want? like whatever is coming in your mind first. Just See, the first, suppose if you're looking at a girl with an approach to date her and you don't know her, suppose वो तेरी दोस्त नहीं है और तू उसको डेट करने के लिए जा रहा है, तो obviously the first time. And what if you know that girl since हाँ, so तो long and if then you are know on a that date. girl for so long, मतलब समझ तेरी दोस्त है बहुत सालों से, या तेरे कॉलेज में है या तेरे ऑफिस में या किधर भी, you know her from years or stuff like that, तो you don't notice her looks, you know कि what kind of person she You know, is. you. हाँ, तो we know what kind of person she is, तो वहाँ पे looks नहीं matter करते. But yeah, if you are going through some dating apps और randomly किसी दोस्त की दोस्त को पटाने आप जा रहे हो, तो आप looks देख के जाओगे, obvious बात है. So what will Yeah, you notice? true. You will notice her looks. Looks. For first time at least, फिर Yeah. आपका conversation matter करता है. Yeah, true. How will you take that forward? Next question. Do you guys find other guys attractive even if they are straight? Like even if you guys are straight. Like what we girls do ki, suppose I have one girlfriend, she is very beautiful and hot and sexy, and like we find her attractive. Attractive in the so, sense you can idolize someone, like समझ ये बंदा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है life में. So obviously you will look after him and you'll be like कि यार सही बंदा है यार, क्या मतलब क्या सोच रखता है, क्या कर रहा है life में. Or suppose he's building his body or building his career, you'll be like कि yeah, discipline is something you look after too. So obviously you'll be get attracted to it, not in that sense, not about the sexuality, but yeah, obviously. yeah, about like he's So that's so a normal into human that behavior. future thing. Yeah, normal human हाँ, अगर आप gay हो तो obviously you will look it in a different way. correct. Very good. Next question. What's more important, a girl face or her body? A girl face. Face or her body? A girl face or her body. I'll say her personality and her opinions and her thoughts. Yeah, that's more important than her body Body or or face? face. Yeah, True. obviously.
Do you notice perfume on a girl? ऑब्वियसली हु विल नॉट. आप जा रहे हो उसके साथ बैठ रहे हो तो वो अपने आप आपके नाक में जाने वाला है. सो यू डोंट नीड टू नोटिस दैट, वो नेचुरली होने वाला है. सो व्हाई विल आई नोटिस इट, वो तो Then होगा. do you ask like तूने आज ये परफ्यूम लगाया या ये Yeah. परफ्यूम लगाया? ये नहीं ऐसे नहीं पूछते. अभी अपने को क्या पता कि परफ्यूम का नाम क्या मुझे है. नहीं पूछेगा तू. मैं क्यों पूछूंगा, मतलब तेरे परफ्यूम का नाम तो है मैं तो lady पूछूंगी. perfume. हाँ, तो वो लेडी परफ्यूम रहेगा, मेरा मेंस परफ्यूम रहेगा. जो भी हो. हाँ तो आई से कि इट इज वेरी नाइस, ये हाँ, लगाया कर. हाँ, हाँ, तो मैं नाम नहीं पूछूंगा कि कौन सा हाँ है. तो जो भी हो बोलेगा ना कि हाँ it's सही good. लगा, Yeah. मस्त लगा. फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब कहीं पे जाऊंगा और मुझे वो परफ्यूम लगे तो तेरी याद आएगी. हाँ ये उसने लगाया था. होता है ऐसे. So sweet. नहीं ऐसे होता है ऑब्वियसली. Yeah, true. Nice. Next question, how do you feel when you are in love? So you'll feel good at the beginning, but love, I'll tell you one thing कि love doesn't last long. मैंने ना आयुष्मान खुराना का एक वीडियो देखा था. I'll give you some seek, you will understand a lot. You उसमें don't ना- give me a secret. नहीं I will tell people. Yeah. कि ना उसमें रणवीर के साथ उसका वीडियो था, पॉडकास्ट था. तो उसने लाइक आयुष्मान इज इन ए रिलेशनशिप सिंस लॉन्ग टाइम. तो उसने उसको पूछा कि हाउ डू यू मेंटेन दैट स्पार्क इन योर रिलेशनशिप आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप फॉर सो लॉन्ग. तो वो लव कैसे मेंटेन किया. तो व्हाट ही सेड कि लव डजंट लास्ट लॉन्ग. आप एक इंसान के साथ प्यार में रह सकते हो फॉर ए सर्टेन टाइम. यू विल फील दैट अट्रैक्शन, यू विल फील दैट स्पार्क. उसके बाद में उस इंसान की आपको आदत हो जाती है. True. राइट. तो इट्स लाइक कि ये इंसान नहीं है मेरे साथ तो मेरे को बुरा लग रहा है. It's not love, it's attachment. Okay, so you love everyone. Basically You love your attraction, parents too. true. You love your brothers. You love your sister. But love और आदत अलग होती है. तो after a point, love is not love. Love is a habit. And then Ayushman gave an advice, अगर आपको आदत ही लगानी है तो अच्छी लगाओ. True, correct. I agree. तो when you are falling in love with someone, take this point कि आपको उस चीज की आदत होने वाली है, उसके behaviors, उसके and if habits, you want उसकी for a life की forever period आदत of होने time. वाली है. So take this point into consideration before falling for someone. When do you know the time is right to bring a girl home to the family? When there is no one at your place. Did you heard the question So when properly? there's no one at your place, that's the right time to bring them Idiot! When do you know the time is right here. Okay. to bring a girl home to the family? पता है. सुन मेरी बात. तो when you feel that, obviously when you feel that connect and you're very sure about it, ऐसा बकचोदी मत करो कि you're not sure and you're confused and you're Yeah, introducing exactly. to your family. ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा. Yeah, Because exactly. Like if that's the not, if you're a 14-year-old सुनना, मेरा girl, interview. or wait, मेरा wait, interview. even I have to add a point. Like if you're a 14-year-old नहीं, girl wait, or इसके लिए boy, हाँ बोल. if you're a 14-year-old or 18-year-old girl or boy and you think that I'm in so love, like yes, you can be in love with someone So and you love. can think, shut up. So null. So lame. You think at that point कि हाँ ये बंदा या बंदी के साथ I will be for a forever period of time, but that happens very rarely जहाँ तक I know. So make sure you know फैमिलीज को go- बीच में मत लाओ इतने जल्दी. करियर Yeah. पे कंसंट्रेट करो, बकचोदी मत करो. Yeah, true. Like take some time, at least like 22 years के बाद you can think about it, because इतना जल्दी सोच के it is like there is no point of thinking Wait at for the your age career of to 18. get settled down. True. प्यार बस प्यार नहीं होता. You need to be very practical about it. Yeah. It's more about the practical stuff. You can bring your love in your life only if it is practical. Practical. That's the most important point. You guys want to know our secrets? He to knows my every secret. Your secrets. Yes. कि a girl secret. Girl secret. Actually लड़की खुद बता देती है. तो it's not about knowing her secrets. If a girl has a good guy best friend or a guy friend, like हाँ, good trust wala, then obviously if we don't have anyone to speak in front of, so obviously we'll go to a guy instead of going to because I to feel कि girls have a habit of even if we promise to someone कि हाँ I won't tell हाँ, this to किधर ना किधर anyone, बोल देगी ना. वो निकल ही जाता है. वो तो पक्का ही है निकलना. इसलिए फिर guys don't share their secrets with Yeah, you. guys don't, and I to trust him, so mostly to I tell him or one of my cousin sisters. So, anyways, yeah. Last question for the video is, what's going through your mind when I ask if you noticed any different about me? वापस पूछ. What's going through your mind when I ask if you noticed anything different about me? मैं तो पहले देखूंगा ना, मतलब अब क्या तो देख different ना, है. I'm sitting in front of you, no? तो मेरे को Then कुछ tell something about me, anything good or bad.
like तो different channel मेरे anything को got तेरे done. में कुछ अलग नहीं लग रहा है, तू कल But जैसी what? थी, आज भी वैसी ही है. तो if I want to He's so notice, dumb, yeah. I want to notice something different about you. You should do something different that I'll Uh, notice कि this is अरे, different आज तूने. okay, आज तो हाँ, different- तूने आज अलग लिपस्टिक पहना है, कल तूने अलग लिपस्टिक लगाया था. हाँ, ये रोज अलग में है आज. लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, आज लिपस्टिक लगाते. यू Wow. शुड से नो कि आज की लिपस्टिक अच्छी लग रही है. हाँ, थैंक यू. ठीक है, ये बोलना है मेरे को. तो तेरा आज का लिपस्टिक है ना, बहुत सही लग रहा है. She wrong question to wrong person. So yeah, here is the end of the video. We completed almost 21 I hope questions. you guys liked it. So how do you feel after And even being if in you this guys, okay, even if you guys didn't like it, do like, share, and subscribe. That matters. video? So yeah, thank you guys so much for watching this video. Also, thank you so much for putting your questions, and that's all we had for today's video. I और थोड़ा really मैचर hope कंटेंट भेजो. I I love really- to answer. I really hope you enjoyed this video, and if you did, please make sure you like, share, and subscribe to my channel. We are close to 200 subscribers. सही है पार्टी चाहिए. So बोलना subscribe हाँ करें. तो सुनो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक नहीं, सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है. सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोग, सब्सक्राइब करो. Please subscribe to my channel, and yeah, please let me know in the comments below if you really enjoyed this, and if you want me to do more such videos with him, please let me know. We'll be very happy to do that with और you. फटाफट करो, जब तक क्वारंटाइन है तब तक टाइम है अपने Yeah, पास. we have much time. So yeah, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.